Assalamu alaikum. Welcome to Urdu Bitcoin live transmission. Today's stream I'm going to do in Urdu and English, both languages. So, very crucial stream today. I'm going to reveal you when the Bitcoin this downturn will end eventually, and also a very amazing project that I'm going to introduce you for NFT Cardano fans. So stay tuned in both the languages. First, I'll do it in English and then switch it to Urdu, and we'll see some Bitcoin technical analysis as well. So उर्दू के नाज़रीन खुश आमदेद आप लोगों को सबको आज की स्ट्रीम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल मिस करने वाली नहीं है। आपको मैं एग्जैक्टली बताऊंगा कि इस वक्त क्या चल रहा है मार्केट में और इस वक्त क्या एंटिसिपेटेड है आइंदा आने वाले कुछ दिनों में, महीनों में और सालों में, और कब जो है वो ये डाउन टर्न जो है वो ख़त्म अख्ताम को होगा, कब हम दोबारा से जो है ट्रू बुल मार्केट देख सकेंगे। और आज की जो तस्वीर मैंने लगाई है अपने थंबनेल पे वो भी एक बुल और बेयर की है। तो लेट्स एनालाइज टुगेदर, देखते हैं इसको, दोनों कुछ चीज़ों को देखते हैं। और एनएफटी का बड़ा ही ज़बरदस्त प्रोजेक्ट मैं लेके आया हूँ आपके लिए, कार्डानो के फैंस के लिए, कार्डानो एनएफटी फैंस के लिए। तो आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा इसको। चलिए शुरू करते हैं। All right, so let's analyze the price action first. Bitcoin actually tried to do a fake out just now this afternoon, and then came right back under $39,000, as you can see that. But you have to understand this, that if we are looking at the 4-hour chart, this is a 4-hour chart, and see how accurately this sell signal of this RX indicator, this RX artificial indicator predicted that. And after that, the Bitcoin could not go up above this level, 42,000 or 43,000 level. It could not come up to this level, these levels, and it has been bashed down since then. And this signal actually, it came down right in the beginning of March. So it has been like quite some time now that this is being playing out really nicely. This is a 4-hour chart I'm looking at. So in this 4-hour chart, really, I mean, the main thing you can see that we are residing right at the top of this hill, this VPVR hill, that where all the action is happening right around $39,000, and Bitcoin is below that red line right now, which is not good. Obviously, we are below on 22-day daily moving average right now. We tried to go up, but then you can see that how quickly we came down. So this is not a good sign. The main title that I had for this stream is that when everybody knows that we are in this bear trend from November last year. And if you remember, if you have been listening to so many people, so many influencers, the people who believe in Bitcoin cycles, for them it's a perfect match. They have been predicting that towards the end of the year the bear market will start, no matter why, when actually. I mean, what causes it? I mean, there could be many multiple reasons, but this is actually happening. Right now, unless the trend breaks itself, this is perfect match. This is perfectly matched with the theory that the Bitcoin is in the bear market now. Do do I believe that Bitcoin will go down to all the way to the $10,000, retracing that big like always it does in its cycles? I don't believe it. I don't buy it. Maybe it will go as low as maybe $25,000, not lower than that, if we get lucky to buy that cheap Bitcoin. But as far as I'm understanding, that $30,000, $32,000, $29,000 are very strong supports that Bitcoin have. Now the thing is that
when Bitcoin will start going really up, really in the next bull run, and we all know this answer, but we have to remind ourselves, unless anything big happens, something really, which I don't see this happening until the next halving cycle. The next halving is going to be taking place in March, April of 2024. So a really true, I would say, bull market, if you're looking for, that will come only in 2024 now, early 2024. But being said that, similarly, that the Bitcoin did not go to the blow up top because a lot of investors, a lot of Wall Street investors, a lot of the old kind of investors are and the corporates are in the game. Big money is in the game, so it didn't go blow up top. Similarly, it will not go down that sharply as well. They will not let it happen also. So that's kind of hope, that's why I'm saying that it will not go to the levels of $10,000 or $15,000. I don't believe that. So I still think that the $29,000 maximum, it will go to $25,000. Those levels will hold, but yeah, um, you have to take it, not like a writing on the wall or something. Uh, you can take it in the what you call grain of salt, like in the hand of grain of salt. Like it can happen. That is what it's look like right now. Currently, the situation we are, the Ukraine war is not over. If we will in my Urdu section, we will look into some news that's going on right now around the world. But in this English section, I would like to wrap up this section for my prediction on Bitcoin, that where it's heading, by saying that it will most likely go down, Bitcoin, and keep this downward trend for as long as next year, this year. And why? There are so many reasons. I mean, anybody can see that, but you just have to put two and two together, so you'll see the number four. Um, so so yeah, I mean, this week, the Fed chairman will announce definitely the interest rate hike, and then definitely it's not a good sign for the investor, for the markets. Markets will tank down if he goes hawkish and goes more than 0.25 basis. Then markets will definitely tumble, and equity markets or these crypto markets will go down very very sharp. And then the it will not end here. In a month and a half time, there will be another, after every alternate month there will be meetings, and there will be more and more hawkish interest rates will be there for the rest of the year. So that's what I'm looking at. Rest of this year will be a downturn. It's not going to come back. Things will not be coming back, and that's what the sentiments are. People are still hoping that no, one blow up top is still there. One blow up top. I will, I will say yes if I see it. If I see Bitcoin makes higher highs and higher lows, then I'll say yeah, it's out of that bearish trend, but not right now. Right now, it's continuously in the bear market. It's continuously going down, and there's no hope really. Um, so that's my opinion, that the rest of this year, until the Feds keep increasing every alternate month, they are keep increasing the rates. They're going to keep increasing the rate, and then the markets will tank down every time they're going to do that. The months they are going to do higher rates, we'll see the higher drops, higher dips. So that's my prediction is. But then once they stop doing that, and then next year will be the year before the halving. So that is where I'm seeing that the market start creeping up, slow by slow, slowly. But then that should be the accumulation time for us. That when the market dip down tremendously, and everything is down, um, and then when they start coming up towards the next year, uh,
that will be the year to accumulation. Everybody will be accumulating that year. There will be dips, so wait for the dips. As soon as the dips comes in, buy some, and then wait for the halving event to happen early 2024. That will be the time the next bull run will begin, and we'll see those numbers that everybody was expecting. So that's my 2 cents on that. Leave your comments in the chat, or later on in this video. What's your thought on that? What do you think? तो मैं उर्दू के नाज़रीन आप लोगों को क्विकली बताता चलूँ, जो मैंने इंग्लिश में बताया भी आप लोगों को ट्रांसलेट कर देता हूँ कि बिटकॉइन की जो बेयर मार्केट है वो तो शुरू हो चुकी है नवंबर से, जो कि नज़र आ रहा है, और ऊपर नहीं आने का कोई चांस लग रहा, क्योंकि जो जिस तरह की न्यूज़ आ रही है, यूक्रेन की वॉर चलती हुई नज़र आ रही है कंटिन्यूस और फैल रही है वो मज़ीद। और दूसरा जो एक और जो फैक्टर है वो रिसेशन का है, जो कि सर पे खड़ा है, और उसको रोकने के लिए मतलब इन्फ्लेशन जो ना बढ़ गया, उसको रोकने के लिए रिसेशन की तरफ जा रहे हैं हम, जो कि इतने इंटरेस्ट रेट हाइक करने जा रहे हैं। अब इस हफ्ते करेंगे मोस्ट लाइकली 2.25, और अगर ज़्यादा किया तो और ज़्यादा तेज़ी से मार्केट्स गिरेंगी। तो यूएस में ये होने जा रहा है, और हर दूसरे महीने पूरे साल तक, इस पूरे साल जो है वो ये होता रहेगा कि इंटरेस्ट रेट हाइक होते रहेंगे। जब भी इंटरेस्ट रेट हाइक होंगे मार्केट्स नीचे गिरेंगी और मज़ीद। तो ये बेयर मार्केट ट्रेंड बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है पूरे साल का। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद अगला साल वो होगा जो कि बिटकॉइन की हाल्विंग है 2024 के स्टार्ट में, मार्च अप्रैल में, उससे पहले का साल होगा। और ट्रेडिशनली वो साइकिल्स अगर हम बिल्कुल एक्यूरेटली देखें तो बिल्कुल फॉलो कर रही हैं अपनी साइकिल, तो अगर वो फॉलो करती है साइकिल और बिल्कुल एक्यूरेटली, तो वो उससे पहले का साल होता है एक्यूमुलेशन का, जब लोग जो है बाइंग कर रहे होते हैं। तो वो टाइम होगा कि जब जैसे जैसे डिप आती आएंगी उस वक्त फिर एक्यूमुलेट करने का टाइम होगा, वो उसमें फिर हम डिस्कस करेंगे उस टाइम में दौरान। तो और कॉइन्स भी आपके सामने लेके आएंगे कि क्या क्या किस में इन कॉइन्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो इसलिए बहुत ही क्रूशल टाइम आने वाला है। अगर मैं आपको दिखाऊं कि मैं आप लोगों से जो बात करता रहा हूँ, कोई मतलब सेल्फ वो उसकी बात नहीं है, लेकिन मैं आप पिछले 2 महीने से मुसलसल, आप मेरे थंबनेल्स देखिए, मुसलसल मैं डाउन टर्न बता रहा हूँ आपको, मुसलसल बता रहा हूँ कि मार्केट नीचे गिरेंगी, अपने प्रॉफिट सेव कीजिए, गिरेंगी मार्केट गिर रही है, अपने प्रॉफिट सेव कीजिए। मुसलसल 1 महीने 2 महीने के पीछे आप चले जाइए, मेरे जो जितने भी थंबनेल्स हैं उसमें मैं मुसलसल आप लोगों को इस चीज़ से आगाह कर रहा हूँ कि मार्केट्स जो है बहुत तेज़ी के साथ नीचे गिर रही हैं। और मैंने इसलिए अपना जो ट्रेंड है थोड़ा सा चेंज किया है, बैक कॉइन्स को और इन चीज़ों को इन्वेस्टमेंट पे मैंने NFT प्रोजेक्ट्स आप लोगों को मुतारफ़ कराना शुरू किए, ताकि थोड़ा डाइवर्सिफाई हो आपकी इन्वेस्टमेंट, कॉइन्स में डूबे ना पैसे। कुछ अच्छे NFT प्रोजेक्ट्स जिसमें आपने डेफिनेटली बनाए भी होंगे पैसे, जो मैंने इंट्रोड्यूस करा आपको, तो वो आपने देखा कि किस तरीके से उनमें हमने सबने पैसे बनाए भी उन NFT प्रोजेक्ट्स में। तो आज भी एक NFT का प्रोजेक्ट बड़ा ज़बरदस्त आपके सामने लेके आया हूँ मैं, और आप यकीनन उसको एंजॉय करेंगे। तो स्टे ट्यून रखिए। लेकिन आखिरी बात मैं कहता हुआ चलूँ बिटकॉइन की प्राइसेस के हवाले से, कि बिटकॉइन के प्राइसेस ये ऐसे फेक आउट और करते रहेंगे, जिस तरह से कर रहे हैं, फेक आउट करते हैं, फिर डंप कर देते हैं, फिर डंप करते हैं, फिर फेक आउट कर देते हैं। इस तरह से लोगों के जो है बहुत लेवरेज में जो है पैसा उसमें जा रहा है। तो आप प्लीज़ लेवरेज गेम मत खेलें, क्योंकि ये बिग वेल से गेम है, और मज़ीद आने वाले दिनों में मज़ीद मैनिपुलेशन होगी, मार्केट बहुत मैनिपुलेट होने वाली है। कोई अच्छे आसार नज़र नहीं आ रहे हैं। जिस तरीके से जंगें चल रही हैं, जिस तरह से इन्फ्लेशन बढ़ी हुई है, जिस तरीके से इंटरेस्ट रेट हाइक होने जा रहे हैं हम इस हफ्ते से, तो कोई इतनी अच्छी न्यूज़ नहीं है बिटकॉइन, अनलेस एंड अनटिल कोई बहुत ही आउट ऑफ द वे जाके कोई अच्छी न्यूज़ आ जाए, कोई ट्वीट आ जाए किसी, या कुछ ऐसी चीज़ आ जाए कि जो एकदम से फिर उसको बढ़ा दे, इसको जो है जंप स्टार्ट दे दे, तो बात अलग है। लेकिन कोई ऐसा मज़ीद अगले 1 साल तक जो है कोई ऐसे चांसेस नज़र आ नहीं रहे कोई इतने अच्छे। तो बेयर मार्केट स्टार्ट है। बेयर मार्केट में क्या किया जाता है, अपना कैश बचाया जाता है, और जैसे जैसे मार्केट डिप करती है उस वक्त बाय किया जाता है। जैसे जैसे कोई बड़ी डिप आती है उसमें बाय किया जाता है। तो इस वक्त भी डिप में ही है मार्केट, अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं उसमें इन्वेस्ट करने का अच्छा चांस है। मगर डॉलर कॉस्ट एवरेज करें, एकदम से सारे पैसे ना लगाएं, हो सकता है आगे और अच्छी मज़ीद डिप्स आने के चांस हैं। तो उसके लिए कैश थोड़ा सा सेव करके रखें, या फिर आप गोल्ड में इन्वेस्ट करें, ऑयल में इन्वेस्ट करें, या NFTs में इन्वेस्ट करें अच्छे प्रोजेक्ट्स में, जिसमें आपका जो है पैसे सेव हो एकदम से इतनी तेज़ी से डीवैल्यू ना हो।
तो ये मेरा आपको ओपिनियन है, मेरा जो एक राय कह लूँ, कुछ भी कह लें इसको आप, एक मशवरा कि प्रॉफिट्स को सेव करें। पिछले 2 महीने से मैं चीख रहा हूँ मेरी सारी 2 महीने की वीडियो निकाल के देखें आप, सब में मैं कह रहा हूँ प्रॉफिट सेव करें, प्रॉफिट सेव करें। मार्केट नीचे जा रही है, नीचे आ रही हैं, और मार्केट नीचे गई हैं आपके सामने। चलिए, मैं इंग्लिश में अपने व्यूअर्स को जो है आज का प्रोजेक्ट जो मैं लेके आया NFT का वो बता दूं, फिर आपको उर्दू में आखिर में बताते हैं। तो सो लेट्स गेट बैक टू आवर प्रोजेक्ट टुडे। Secret Bull Society. Secret Bull Society is a very unique project. It is, you could say that it's a replica of Bull's Society from Ethereum based blockchain. There's a project for Bulls. Again, the same artist, Gal Yusuf, who did that Bulls Society over there on Ethereum blockchain. In Cardano, there's this very similar ideas, but very progressive and very forward thinking team. Very nice artwork, amazing artwork. Very high quality 3D generative NFT collection. They are going to mint on 18th March, 8 p.m. UTC. So keep ready your Cardanos. It'll be like 45 Cardanos. Right now, Cardano is very cheap, so not expensive at all. Look at the sneak peeks. These are really some cool artwork there, and I'm following their Discord channel. Very active community, and that's what you need for these NFT projects to be successful. You need a very active social media and very active Discord channel. So I've been following their Discord channel, and some really cool art that is in the sneak peek. If you can see, amazing. So if you are interested in in NFTs, and this is a really cheap to mint NFT, and this is not allowed. They are not allowed. They are like only 4,000 bulls there will be. 45 Cardano, as I said, and then whitelist. They already closed their whitelist. I couldn't make it, um, but I will definitely try to mint one or two on 18th. So this is the project. They have a cool, really nice roadmap. Very active social media. As you can see, they just released this. I use this in my thumbnail. Very cool Spider-Man bull. Really, I mean, this is something amazing. All the big YouTubers, they're talking about it. So a lot of action going on with this community, with this project. Um, I highly recommend you guys to check their website, and their social links are in my description. So yeah, you can look their roadmap, and then I mean I just cannot stress enough that how cool this project is, and we have seen on Ethereum that these bulls societies can go really high. So again, don't invest too much in these projects. It's just something like when the markets are boring on the coin sites. I would find myself really interested in these NFTs, really cool artwork, and this is amazing that these NFTs they are going up and up in prices. Whatever the NFTs they are, I've been introducing you, and a lot of these projects are going really making really good money. People are making really good money in these projects, although the equity markets and the other crypto markets are down, but they are not stopping. The NFTs are not stopping at all, and the Cardano NFTs are the easiest way to get into the game. Very cheap, not that expensive. Their most expensive is Boss Cat Rocket Clubs, $2,000, $3,000, not more than that. Those Boss Cats are.
and then those boss scouts are making good strive. I mean, the project I really like in the beginning, like ADA Punks, they actually boss scout just announced that they did a friendship with ADA Punks now, so they shook hand with ADA Punks. So if you hold any ADA Punks, congratulations, the price is already doubled this from this morning after this news came out. So a lot of things happening in these NFT worlds on Ethereum also. I've introduced you Walking Dead, the real Walking Dead team behind it. Really cool project again. I think it's the reveal is on 18th as well. So a lot of things happening this week for NFT. Cool stuff. I will definitely come back on these projects and keep you guys updated. So check these out. So thank you very much for joining me, my English viewers. उर्दू के नाजरीन, आप लोग जैसे देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे कि ज़बरदस्त आर्ट वर्क के साथ सीक्रेट बुल सोसाइटी का ज़बरदस्त प्रोजेक्ट आपको मैं इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ। उसके लिंक्स, इनके सोशल्स के सारे लिंक्स, इनकी वेबसाइट के जो हैं एक्चुअल जो सही ट्रू वेबसाइट है इनकी, वो सारे के सारे मेरे डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। आप उसको जाके चेक कीजिए। कार्डानो बेस्ड प्रोजेक्ट है। 45 कार्डानो का मिंट होगा ये 18 तारीख को। डेफिनेटली वर्थ कीपिंग एन आई ऑन इट। इस मतलब वर्थ करता है कि आप इसको अगर एक आदमी बुल उठाने में कामयाब हो जाता है, क्योंकि बहुत मैं नहीं समझ सके इसकी मिंटिंग बहुत ज़्यादा चलेगी। 8 PM UTC टाइम होगा और बहुत मेरा ख्याल है कि तेज़ी से ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ 4000 टोटल मिंट हैं। इनकी वाइट लिस्ट वगैरह ऑलरेडी क्लोज हो चुकी है, आप देख सकते हैं 45 ADA का। तो ये बहुत ही कूल आर्ट, अगर इसने इनके डिस्कॉर्ड चैनल में जाएं आपको नज़र आएगा। बहुत ही ज़बरदस्त आर्ट है इनका। आई रियली लाइक दिस वन। मैंने इसलिए अपने अभी रिसेंटली अभी भी आया है शाम को ही कुछ घंटे पहले स्पाइडरमैन का बुल, तो अमेजिंग। तो मैंने इसको अपने थंबनेल में भी इस्तेमाल किया। आई होप कि आपको ये पसंद आएगा। बहुत ही खूबसूरत आर्ट है, बहुत ही इसकी जो डिटेलिंग है बहुत ही ज़बरदस्त है। रियली कूल। आई थिंक इट्स वर्थ हैविंग एट लीस्ट 1 or 2 बुल्स। एक दो बुल्स तो होने चाहिए आपके पोर्टफोलियो में निफ्टी के। तो बहुत ही ज़बरदस्त। और इनकी फिर आगे रोड मैप बहुत ही, मैं उसमें डिटेल में नहीं जा रहा, आप उनकी वेबसाइट वगैरह चेक कीजिए, इनके रोड मैप वगैरह पढ़िए। बहुत आगे काफ़ी ज़्यादा जो है वो इनके जो आगे प्लान्स हैं बहुत ज़बरदस्त हैं। जस्ट लाइक जो मैंने मेटा ईगल के बारे में आपको बताया था, या दूसरे इथेरियम बेस्ड जो जो प्रोजेक्ट्स हैं वो कर पाते हैं। जैसे कि अभी वॉकिंग डेड को मैंने आपको इंट्रोड्यूस कराया, वो कर पाते हैं। मेरी पिछली वीडियो में मैंने इंट्रोड्यूस कराया आपको वॉकिंग डेड, वो भी 18 तारीख को रिवील होने जा रहा है। तो इस तरह के प्रोजेक्ट्स उस कैटेगरी में आता है ये प्रोजेक्ट भी। और कार्डानो बेस्ड है तो इसको मिंटिंग वगैरह बहुत चीप है। तो डेफिनेटली इसके ऊपर नज़र रखें। और न्यूज़ की मैंने बात की थी, मेरे ख्याल से सभी आ गए हैं क्या चल रहा है दुनिया में, तो उसमें टाइम वेस्ट नहीं करते न्यूज़ में आपका मज़ीद। और जो जो बात थी वो मैंने आपको बता दी कि बेयर मार्केट में है। डेफिनेटली इट फील लाइक इट कि बेयर मार्केट में आ रहे हैं हम, या आ चुके हैं 2-3 महीने से ऑलरेडी बेयर मार्केट चल रही है। और बोरिंग काफ़ी प्राइस एक्शन चल रहा है वहाँ पर। तो इसलिए NFTs में दिल लगाएं अपना थोड़ा बहुत, अगर आपको इसमें लगाना ही है तो, किसी और चीज़ में नहीं तो NFTs में फिर भी फ़ायदा हो रहा है कहीं ना कहीं, किसी न किसी तरीके से आप थोड़ा थोड़ा पैसे बना सकते हैं इसमें NFTs में। तो ये आज का प्रोजेक्ट था। डेफिनेटली आई होप कि आपको पसंद आया होगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए मेरी वीडियोस को और मेरे चैनल को। काफ़ी मेरी बिजीनेस काफ़ी बढ़ गई है, उसके बावजूद मैं कहीं ना कहीं से टाइम थोड़ा बहुत निकाल के शाम में रोज़ाना, और पाकिस्तान में सुबह का टाइम होगा इंडिया में, लेकिन यहाँ अमेरिका में अभी शाम का टाइम हो रहा है, रात का। तो मैं थोड़ा बहुत टाइम निकाल के जो भी मैं थोड़ी बहुत रिसर्च कर पा रहा हूँ, मैं आप लोगों को आगाह ज़रूर कर रहा हूँ कि क्या चल रहा है मार्केट्स में और क्या नज़र आ रहा है आगे, ताकि आप लोगों को उससे फ़ायदा हो सके। तो इसलिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मुझे मज़ीद इंकरेजमेंट मिल सके कि मैं इस चीज़ को कंटिन्यू कर रखूँ। थैंक यू वेरी मच। अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफ़िज़।